Hello, everyone, and I hope all the ardent learners, all the students, they're doing well. As I have promised to some of the emails and comments on the channel that I would post a fresh video on this topic. The previous video was meant for the students who were there in the classes, either online or offline, who had the notes, and I just wanted to give them a last minute quick revision and I jot down all the points. But now I guess the same topic is prescribed in some other university as well. So for them who had been waiting for, who had been messaging me, so this is now for you, dear students, and I really appreciate your concern, your appreciation, your regards. That is the reason I'm back with this video again. So I would suggest you all, whosoever is watching the video, to note the words like the answer line to line on your copies. Keep listening to my voice. This is the short way to learn it in first go. So whatever I'm dictating, whatever I'm actually pinpointing on the screen, you should keep noting down each and every thing side by side and you'll be able to learn. All right, so this is Introduction to The Empire Writes Back. The book has been edited by Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffins, and what kind of question you may have on this. This is introductory section introduction. An introduction always sets the stage. It always tells us what is going to be there in the book. So we are going to discuss colonial and post-colonial literatures in Empire Writes Back, and most probably, most importantly, what does this mean, Empire Writes Back? Right, so let's begin with the answer. The essay Introduction to The Empire Writes Back has given a detailed study of the colonial and post-colonial literature. Colonial literature, literature that was written before the independence, and post-colonial literature means literature that is written after the independence. So technically this is the difference between the two. But there is a question from my side कि अगर हम इंडिया की ही बात करें, हम 14 अगस्त 1947 को एक कॉलोनी थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, और 16 अगस्त 1947 में वी वर इंडिपेंडेंट, हम आजाद हो गए. तो क्या अगर आप 16 को कोई बुक लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, उसमें से 14 की मेमोरी इरेज हो सकती है? इज इट पॉसिबल? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स कि अगर आप पोस्ट कलोनियल एरा में भी कुछ लिखेंगे, colonial times, colonial exploitation, colonial hardships definitely are going to be there in post-colonial literature. And that is the beauty of technically, चाहे हम आजाद हैं, हम लिख रहे हैं, but post-colonial literature talks of all those things that happened to the people of the colonized countries. So the title of the book is really very meaningful as it deals with the literature of the countries that were under domination of imperial powers. तो जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं उन्होंने रूल किया और उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल, पहले उन्होंने लिखा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, पोस्ट कॉलोनियल एरा में आजादी के बाद उन लोगों ने अपने जो एक्सप्रेशन थे वो लोगों के आगे रखे. It has been mentioned in the introductory paragraph of the introduction. तो इंट्रोडक्शन का भी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या बात हो रही है, दैट बताया जा रहा है हमें, द बुक डील्स विद एक्सपीरियंस ऑफ कलोनियलिज्म. तो जिस जिस कंट्री में कलोनियलिज्म था, जिन्होंने भी गुलामी सही है, उनका एक्सपीरियंस, एंड डे टू डे रियलिटीज एक्सपीरियंस्ड बाय कॉलोनाइज्ड पीपल. तो कॉलोनाइज्ड पीपल जो थे, हम जैसे बहुत सारे और, इंडिया जैसे बहुत सारे और, उन्होंने क्या क्या फील किया, क्या क्या सहा है रूल्स, अंग्रेजी रूल्स के या बाहरी शक्तियों के शासन में. दैट्स व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर. In this pursuit or in this regard, literature plays a very significant role in expressing the new perceptions. तो जो नई perceptions हैं उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है. So post-colonial literatures, post-colonial literature are the writings. तो
You may be asked this question, what is a post-colonial writing or what is post-colonial literature? So these are the writings by those who were formerly colonized by Britain and others. This is important to add. If we would say by Britishers, it means we are only talking of all those colonies which were under Britain. बट सिर्फ ब्रिटेन नहीं था रूल करने वाला, उसके साथ फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, ये कंट्रीज भी थे. These seem to suggest a concern only with the national culture. तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हैं, दे सीम, ऐसा लगता है कि वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, दे आर कंसर्न only with the national culture after the departure of the imperial powers. जब जो imperial powers हैं वो देश को छोड़ के चली गई हैं, उसके बाद जो national culture है उसको promote करने के साथ उसके साथ deal करता है post colonial literature. The period before the independence of the colony is called colonial period, and after the independence the period is called post colonial period. In fact, the term post-colonial is an umbrella term. तो ये बहुत बड़ी umbrella term है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें cover होती हैं. That covers under it all the cultures affected by the imperial process of Britain, France, Portugal, and Spain. The countries that come under the tag of post-colonial literatures are, और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे तरह इनकी गुलाम रही हैं अंग्रेजों की? They are Australia, Bangladesh, Canada, Caribbean countries, India, Malaysia, Malta, New Zealand, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, and South Pacific Island countries. So all these countries had been colonies once. The literature of USA should also be placed in this category. तो इसमें USA का literature भी आ सकता है. Why? Because African Americans or African versus Americans or white versus black का जितना ज़्यादा struggle USA के American literature में है और कहीं नहीं मिलता. The literature of USA should be placed in this category. The only common factor among these countries is the colonial experience that their residents or the natives had experienced. तो सबसे ज़्यादा common चीज़ क्या है? इन सबका common concern, एक binding factor क्या है? वो है the binding factor among these countries is the hardships, right? The colonial experience that they all had together or they all had experienced. In case you want to learn it, keep writing simultaneously. आपको खुद फर्क पता चलेगा आपकी learning में. Keep writing it. Don't just, feel that okay हो जाएगा और हम screenshot लेके कर लेंगे. So try to do it beautifully. So the study of English. Now, the focus is इंपीरियल पावर का या कॉलोनाइजेशन का एक टूल रहा है इंग्लिश लैंग्वेज, आज भी कायम है. So the study of English has always been a densely political and cultural phenomena. तो ये सिर्फ एक language linguistic phenomena नहीं था. It had been a political and cultural phenomena. Politics भी involved थी इसमें और cultural impact भी था. Every language and literature has a feeling of nationalism in it. तो अगर आप हिंदी में बोलते हैं या मैं पंजाबी च गल करा, that will have its own nationalism in it. It will have its own culture within it. Perhaps with the same feeling, Sir Henry John Newbold, when he lived from 1862 to 1938, he was a British government advisor, presented his report entitled The Teaching of English in England, right? Now in England. In 1921. Here, the focus should be on the England. What does it mean? Not only Britain, not only United Kingdom, but all those areas and countries where Britain had its rule, including India, right? So it had its focus on English as linguistic and literary standard throughout British Empire. So British Empire. Now Empire writes back. एक चीज वो थी जो अंग्रेजों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी, अब वही एम्पायर, वो सारी एम्पायर दोबारा लिख रही है अपनी हिस्ट्री
खुद के हाथों से अपनी लैंग्वेज में, अपने एक्सप्रेशन में, अपने वर्ड्स में, विदाउट एनी प्रेशर. The emergence of English as an academic discipline also produced the 19th century colonial form of imperialism. तो हुआ क्या? जब इंग्लिश लैंग्वेज इमर्ज हुई, इंग्लिश लैंग्वेज सामने आई और इसको पास कर दिया गया एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. अभी तो एज सब्जेक्ट आ रही है. नाउ इट्स नॉट, दे आर नॉट टॉकिंग ऑफ इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. नो, इट्स इंग्लिश एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट. ये भी अपनी तरह का एक इम्पीरियलिज्म था कि ना सिर्फ पॉलिटिकली, ना सिर्फ जियोग्राफिकली, साइकोलॉजिकली भी इनको अटैक किया जाए, साइकोलॉजिकली भी इनको अपने चपेटे में लिया जाए. एंड ऑल दीज examples are quite evident when we go through the text of Robinson Crusoe and we see how Robinson Crusoe is teaching Friday English language. This is the same factor that we have seen in Tempest. If we look at it from post-colonial point of view, how Prospero is teaching lessons to Caliban, right? So this is how all the Britishers, they try to teach Indians their language. For them, for us, it was like we would be able to see through their tricks. हमारा English जानने का, पढ़ने का ये मकसद था. But for them, I'm really sorry. But for them, on the other side, they wanted to produce a class of clerks who could be mediators between them and Indians, right? तो एक उनको mediator चाहिए था, एक translator चाहिए था जो उनकी भाषा भी समझ पाता और हमारी भाषा तो उसको आती ही, तो उन्होंने natives को English सिखानी शुरू की. In this context, Gauri Vishwanathan has given his strong arguments regarding English literary study in India. क्या कहते हैं वो इसके बारे में, इंग्लिश स्टडीज के बारे में जो इंडिया में थी? He says British colonial administrators discovered, I missed less than one line here, that's why I have used 3 dots. British colonial administrators discovered an ally. This means a friend. Ally means a friend. In English literature to support them in maintaining control of the natives under the guise of liberal education. तो मुखौटा क्या पहनाया उन्होंने इस चीज को? क्या गाइज की उन्होंने? अंडर द गाइज ऑफ लिबरल एजुकेशन. नाम दिया लिबरल एजुकेशन का कि हम आपको लिबरल एजुकेशन दे रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज भी आपको ऐसे फ्री में सिखा रहे हैं. बट एट द बॉटम दे वांटेड टू maintain a control, complete control of the natives. So it is generally believed that the study of English and the growth of empire progressed with the same ideology, right? Study of English and growth of empire progressed with the same ideology of colonizing the people living in a colony who were known as savagery, native, primitive, who needed reforms. तो लाइन का मतलब क्या है? तो अंपायर की ग्रोथ और इंग्लिश की स्टडी जो है ये सेम आइडियोलॉजी से फली फूली. कैसे फली फूली है? क्योंकि मेन आइडियोलॉजी क्या थी, विचारधारा क्या थी? लोगों को कॉलोनाइज करना है, कॉलोनी में रहने वाले लोगों को कॉलोनाइज करना है. जो कौन है? जो सेवेज हैं, वाइल्ड हैं, जो बिकॉलिक हैं, जाहिल गवार हैं, जो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, नेटिव हैं, प्रिमिटिव हैं, पुरातन विचारों के हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, और उनको व्हाट दे नीडेड रिफॉर्म्स. उनको सुधार चाहिए, उनको खाना नहीं आता. अब सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो आप ये समझ लो कि इनके कहने का मतलब था कि हमें खाना भी नहीं खाना आता था भाई, हम मिट्टी में फेंक के खाना खाते थे. एंड दे वांटेड टू टीच अस गुड लेसन्स कि हम कैसे छुरी और कांटे से खाएं, राइट? So that's in a rude language, and otherwise they just wanted to civilize us. For them, we were uncivilized. We were not even sure of what the worth of a ruby or a kohinoor was, and they wanted to teach us certain beautiful lessons of life, and that is the reason they conquered us, they ruled over us, and they actually made us their slaves. Literature was performing the same act as monarchy was doing in political formation. So literature वही act play कर रहा था, वही role play कर रहा था जो monarchy means kingship, rulers, इनके जो administrators थे वो कर रहे थे political formation में. उधर वो politically हमें colonize कर रहे थे, इधर literature भी वही काम कर रहा था.
Literature and the imperial power had one motive, which was to colonize mind and soul of the colonized people. तो दोनों एक ही काम कर रहे थे, लिटरेचर भी और इंपीरियल पावर भी, दोनों का मोटिव एक ही था, कॉलोनाइज करना, हमारे दिलो दिमाग पे हावी होना. When elements of the periphery and margin started threatening the center, the imperial power rapidly incorporated them. ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या मतलब है इसका? Let's have a look at it. This means ये है पेरिफेरी और ये है सेंटर. तो जब पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब बिल्कुल जिनको मार्जिन लाइन पे रखा, बाहर रखा हुआ, सेंटर में मान लीजिए ब्रिटेन आ गया, तो जब पेरिफेरी और इसके एलिमेंट्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे को थ्रेटन करें, पेरिफेरी एंड मार्जिन स्टार्टेड थ्रेटनिंग, ये जो पेरिफेरी पे हैं, मार्जिन पे जो लोग हैं, ये सेंटर को थ्रेटन करना शुरू करे, तो इंपीरियल पावर क्या सोचती है कि फटाफट से इनको मिक्स कर दो ताकि कोई फर्क ही ना रहे. अब वो मिक्स करने का जरिया क्या बना इनका? दैट वाज इंग्लिश लैंग्वेज. I hope I am clear till now. So let's move forward. So periphery ने अब क्या किया इन्होंने? They started merging them together. अब और वो merge करने का काम कैसे किया? Incorporate कैसे किया गया? एक नया फंडा यूज किया, that was of using the language as a tool. And in Edward Said's words, this was a process of conscious affiliation under the guise of affiliation. तो affiliation का मतलब किसी से associate होना. उन्होंने affiliation के उसमें भेस में हमें conscious affiliation का process था कि हम जानबूझ के उनको follow करें, जानबूझ के follow करें. मतलब उन्होंने हमें ये कहा कि ये रही language, right? और इसको जैसे सीखो, तो हम में से खुद लोगों ने ही उसको अडॉप्ट किया कि नहीं नहीं, अगर हम इसको सीख जाएंगे तो वील बी एबल टू रीच देम, हमें इनका सब समझ में आएगा, इनके ट्रिक्स समझ में आएंगे. सो ये कॉन्शियस एफिलिएशन हमसे जानबूझ के करवाया गया, हमें अलग अलग तरीके के वो कह लो जाल में फंसा के. सो दिस गेव बर्थ टू a desire of being accepted, adopted and absorbed by the center through the language. और लोगों में एक जील पैदा की गई, अगर आप ये लैंग्वेज सीखोगे आपको अच्छी जॉब मिलेगी. अगर इंग्लिश लैंग्वेज, till date this is the factor, even if you are going for the interview of for the post of a Hindi teacher, you are supposed to speak in English, you are supposed to have good command over English and computers, right? So that's what they wanted and we adopted. We were dying to be like them. और कुछ लोग ऐसे थे जिनको जैसे इंग्लिश बाबू लैंग्वेज थी ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज, उनको तो बाबू लोग जो थे वो ऐसे बने, उनको लग रहा था कि वी आर फार बेटर देन अदर्स. और ये जो एक होड़ थी लोगों में, एक रेस थी, डिजायर थी टू बी एब्जॉर्ब्ड, टू बी एक्सेप्टेड बाय द सेंटर. सेंटर में कौन है? सेंटर में ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं. और सेंटर में अब्जॉर्ब होने के लिए लोगों ने क्या किया, मतलब अगर मैं दोबारा से वो ड्रॉ करूं, ये सेंटर में अगर यहाँ पे ब्रिटिशर्स बैठे हैं, पेरीफेरी और मार्जिन पे यहाँ पे इंडियंस बैठे हैं या कॉलोनाइजर्स बैठे हैं, तो इन्होंने इनको दिया लैंग्वेज और दे वांटेड टू बी देयर कि हम इनके जैसे हो जाएं, बट दे हैड सर्टेन पैरामीटर्स टू डिस्टिंग्विश. I heard somebody's interview once, though it was an interview of a British cop. So in case you wish to get into police, there is only one way of entry. That is simply just that you have to be a cop first of all, and then with promotions and your dedication and good job profile, you keep getting promotions and you reach the higher level. But what happened in India, or what is happening in India? There is one criteria that you enter police force as normal constable, and then there is one criteria that you straight away go at an ASI position, and then there is one position that you clear PCS test and you will be DSPs and all, right? I might be wrong even. And then there is one criteria that you clear IAS exam and you will be into the administration straight away, right? Who made it? Britishers made it. For whom? For themselves only. कि हम छोटी मोटी jobs में बैठे रह जाएंगे and they'll still rule over us. हमें job तो दे देंगे, we will get good salary, but ultimately who will rule over us even in the profession? They. और उनके जमाने के बने हुए टेस्ट आज भी चल रहे हैं.
right? They have a different system for themselves in their country, but they made different system here in our country. यहाँ पे एक profession में enter करने के 2-3 tiers हैं, rules हैं, regulations हैं, right, levels हैं, and we couldn't see through their tricks. आज तक हम उन्हीं चीजों को लेके बैठे हुए हैं. We are not making any amendments and reforms. तो ये उस टाइम पे भी था. We wanted to get absorbed. Then the colonized made an attempt to become more English than the English. तो लोगों में ये अब इतने अंग्रेज बहुत सिंपल हैं, हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, राइट? अगर आपने फर्स्ट ईयर में वो चैप्टर पढ़ा है ब्रोकन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश, सो आई जनरली लाफ एट दैट चैप्टर कि अगर आपने अंग्रेजों के सामने अंग्रेजी उनसे भी बेटर बोल दी तो यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय देम. They'll take you as a trickster or as a rogue. Imagine, अगर आप उनके सामने उनकी भाषा अच्छे से बोलोगे तो आप एक ट्रिकस्टर हो जाओगे. So यहाँ पे तो ये जो इंडियंस थे जिनको नई नई इंग्लिश अब जानने को सोचने को मिली थी, they made an attempt to become more English than the English by denying their origins, right? अपने origins को भूल गए और अंग्रेजों से भी ज्यादा बड़े अंग्रेज बनने की उन्होंने कोशिश करी. हंसी आ रही है. What we are doing these days, हम यही कुछ कर रहे हैं. Henry James and T.S. Eliot are two examples in the case. तो इस केस में दो बहुत अच्छी examples हमारे पास हैं, Henry James और T.S. Eliot. But later on, the post-colonial societies established their difference from Britain. तो later on क्या हुआ? Post-colonial जो societies थी, they established their difference from Britain and they divided English studies into linguistics and literature. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंग्लिश स्टडीज को दो में आगे डिवाइड कर दिया, लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर में. अब इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाया जाने लगा, इंग्लिश नॉट ओनली एज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश लिटरेचर और उधर लिंग्विस्टिक्स. व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स? लिंग्विस्टिक्स का मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, राइट? एंड इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू डीकोलोनाइज आवर माइंड्स एंड आवर temperaments. Even I'm doing it, though I am teaching you English, I'm uploading lessons on English, but I'm pursuing PhD as well. I am doing it, I'm pursuing it on a topic, like on a writer who's Indian, rather who's a regional writer, right? Who I cannot disclose, like, it openly, but definitely once I'll be done with everything, I would definitely tell you all what the topic is and how I'm doing and what I'm going to prove in that. So the post-colonial literature progressed through various stages, asserting their differences from the imperial center. During the imperial period, the elite class of writers identified themselves with the colonizing power. तो जो बच्चा सबसे पहले लोगों ने लिखना शुरू किया ना, वो लोग थे जो इंडिया की अमीर घरों से थे, जो लंदन से पढ़ के आए थे और वो अंग्रेजी नुमाई लोग थे, right? So they were representative of the imperial power. वो ultimately imperial power के ही representatives थे, who failed to express the real life essence and emotions of the colonized. और वो लोग इंडियंस के जो फीलिंग्स थे ना, इंडियंस के जो बेसिक जो ग्रास रूट लेवल के इंडियंस थे, इनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस अच्छे से कर ही नहीं पाए. फॉर एग्जाम्पल, Wentworth's Australia, Frauds Oceania and the English in the West Indies, and the travel diaries of Mary Kingsley. The writers of the first stage gave a detailed reportage of landscape, custom, language, but their main concern and inclination was towards the center. Center में कौन है? Britishers. तो उन्होंने इंडिया का लैंडस्केप दिया, इंडिया के कस्टम्स बताए, इंडिया की डिस्क्रिप्शन तो दी, लेकिन इनका मेन इंक्लिनेशन क्या था? दैट वाज टुवर्ड्स इंग्लिश ओनली. वो इंग्लैंड सेंटर को ही या इंपीरियल पावर्स को ही ज्यादा फोकस में रख रहे थे. रुडयार्ड किपलिंग्स द क्रिसमस इन इंडिया. इमेजिन, नाम तो इंडिया का है बट फोकस किस पे है? क्रिसमस पे, राइट? तो ये है सेंटर. Rudyard Kipling's The Christmas in India was one such poem, and it is mentioned in the essay that such text can never form the basis for an indigenous culture. तो अगर आप ऐसी एग्जाम्पल्स लें कि भाई इंडियन ने लिखा है और ऐसे इंडियन ने लिखा है, लेकिन ऐसी कई सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास जहां पे लिखने वाले, नॉट एग्जैक्टली दिस वन, किसी और की भी बात करो, जहां लिखने वाले इंडियन होंगे लेकिन उनके का लिखने का स्टाइल या उनका डेडिकेशन फॉरेनर्स को ही होगा, ब्रिटिशर्स को ही होगा,
तो ऐसी लिखावट, ऐसी राइटिंग्स कभी भी आपके कल्चर का बेस नहीं बन सकती हैं, राइट? सच टेक्स्ट कैन नेवर मेक द बेस ऑफ योर कल्चर. The second stage of production of literature was under the imperial license by natives or outcasts. तो कौन सा लिटरेचर था? लिखने वाले कौन थे? इट वॉज बाय नेटिव्स एंड आउटकास्ट, देश निकालने वाले, जो जिनको आउटकास्ट बोलते हैं कि ये तो है ही वही विद्रोही सा बंदा है, राइट? तो लेकिन इट वॉज अंडर इंपीरियल लाइसेंस. जितना उन्होंने अलाउ किया उतना ही लिख पाते थे. ये वो लोग थे सेकंड स्टेज वाले. फर्स्ट उनके रिप्रेजेंटेटिव ही थे. सेकंड वर the second stage of production of literature was under the imperial license. कौन लिखने वाले थे? नेटिव्स ही थे या आउटकास्ट. It was a bulk of poetry and prose written by English educated upper class writers in India and Africa. तो ये भी कौन से थे? ये पोइट्री और प्रोज लिखा इन लोगों ने भर भर के. इंग्लिश एजुकेटेड अपर क्लास राइटर्स थे. ये भी अपर क्लास राइटर्स ही थे, क्योंकि हर किसी के बस में बात नहीं है इतनी इंग्लिश सीखना कि उसमें किताबें लिख पाना. इट मीन्स अ लॉट. मतलब आपको नॉर्मल से बहुत ज्यादा इंग्लिश आनी चाहिए तभी लिख पाओगे, राइट? अगर मैं कहूँ कि मुझे हिंदी में एक थीसिस लिखना है, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. आई हैव ओनली learned English, Hindi, or studied Hindi from 6th to 10th, right? I cannot do really well in that. But at the same time, अगर कोई और language हो, ask me to do it in Punjabi or English, I would be able to. तो these writers wrote in the language of colonizers. तो इन लोगों ने इंग्लिश में लिखा. And the literature was under the direct control of the imperial ruling class. Directly उन लोगों के अंडर ही लिखा इन्होंने, उनकी देख रेख में ही लिखा. This very notion underlines the concept of hegemony or dominance. तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? जहां आप किसी के रूल के अंडर, किसी के डर के अंडर लिख रहे हो, that is hegemony, dominance or the ruling body. But Britain, like other powers, were relegated, means assign an inferior rank to the minor position with the passage of time, and USA took an important status as an emerging power. तो hegemony का मतलब dominance हो गया. But Britain, like other powers, were relegated, not were, Britain was आएगा, या Britishers कर दीजिएगा यहाँ पे. Britishers, like other powers, were. पार्स के साथ है इसलिए वर लगा, सॉरी, पार्स के साथ है इसलिए वर. रेलीगेटेड टू अ माइनर पोजीशन विद द पैसेज. तो धीरे धीरे ये जो डोमिनेंस है ये कम होती गई, और जैसे यूएसए है, इट टुक एन इम्पोर्टेंट स्टेटस एज एन इमर्जिंग पावर. ऑन द अदर हैंड, English of Southeast England had become universal, and it continued to dominate the cultural production in the post-colonial world. और dominate क्या हुआ लैंग्वेज यहाँ पे? पूरे इंग्लैंड की नहीं, इंग्लैंड में से भी साउथ ईस्ट इंग्लैंड की जो इंग्लिश थी वो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल हो गई. यूनिवर्सल मीन्स एप्लीकेबल टू ऑल, पूरी दुनिया में फैल गई. अब मेन फीचर जो था, द मेन फीचर ऑफ इंपीरियल ऑपरेशन इज कंट्रोल ओवर लैंग्वेज. तो मेन फीचर क्या था इंपीरियल ऑपरेशन का? लोगों को ऑपरेस कैसे किया इन्होंने, दबाया कैसे उनकी लैंग्वेज पे कमांड करके. It became a tool in the hands of the colonizer to colonize the minds of the people living in colonies. तो कॉलोनी के लोगों का माइंड कॉलोनाइज करने के लिए कौन सा हथियार अपनाया गया? लैंग्वेज का. There is difference between the standard British English of the empire and the English in post-colonial countries. Now look at the difference. This is really important. This English is with capital E, this English with small e. Right? तो मेन डिफरेंस क्या था स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश का और वो इंग्लिश जो कॉलोनीज में पढ़ाई जा रही थी? It means the language or the English of the center is considerably different than that of periphery. तो जो सेंटर में इंग्लिश थी, सेंटर की इंग्लिश जो थी वो पेरीफेरी की इंग्लिश से डिफरेंट थी, राइट? पेरीफेरी की इंग्लिश से सेंटर वाली इंग्लिश वाज डिफरेंट. Their language was shaped by the oppressive discourse of power. तो लैंग्वेज कैसे शेप हुई थी उनकी? सेंटर की लैंग्वेज वाज डिफरेंट, उसमें oppressive discourse, discussion of power थी, वो डोमिनेटिंग थी. लैंग्वेज, वोकैबुलरी, स्टाइल सब वैसा ही था. और पेरीफेरी वाली वाज डिफरेंट.
Yet they have produced most innovative literatures of the modern time, modern period. चाहे इंग्लिश was different, चाहे उनको वो हक, वो तरीका, वो एक्सप्रेशन देने की मनाही थी, फिर भी they could produce wonderful literature. In the 19th century, Australian novel Policy and Passion by Mrs. Champel prayed, one character says, to be colonial is to talk Australian slang, everything that is abominable. Abominable. तो एक करेक्टर है ऑस्ट्रेलियन नॉवल पॉलिसी और पैशन में, मिसेस चैम्पल, वो क्या कहती हैं? टू बी कलोनियल इज टू टॉक ऑस्ट्रेलियन स्लैंग, कि कलोनियल होने का मतलब ऑस्ट्रेलियन स्लैंग बोलना, एवरीथिंग दैट इज abominable. Another important feature of post-colonial literature is the concern or relationship between place and displacement. इसका क्या मतलब है place and displacement? India is my place, right? I speak in Hindi. मान लीजिए ये उस टाइम की बात हो रही है, और पंजाब is my place and I speak Punjabi. But when it is dominated by the English people or the Britishers, अब मेरी प्लेस क्या होगी? दे एंटर एंड आई एम आउट. आई एम आउट ऑफ द सीन. सो प्लेस से डिस्प्लेसमेंट हो गई. राइट? आई एम लिविंग इन इंडिया बट आई एम नॉट फीलिंग एट होम. आई एम लिविंग इन माई ओन स्टेट बट मेरे को मेरे वाले हक है ही नहीं है. मुझे एट होम फील ही नहीं कराया जा रहा. दैट मीन्स प्लेस में से डिस्प्लेसमेंट हो गई. आई होप नाउ दिस पार्ट वुड बी क्लियर. It creates post-colonial identity, the relationship between self and the place. The active sense of self is destroyed by dislocation caused by migration and experiences of enslavement. तो हुआ क्या है? While recording, it's exact 12 and wish you all a very happy new year. A very happy new year. May this year 2023 it becomes prosperous and happy for you all. Coming back to the topic, the active sense of self is destroyed. तो जो self वाली feeling है मेरा, that is destroyed by dislocation caused by migration and experiences of enslavement. जब गुलामी आ गई या माइग्रेशन हो गई, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, तो जो सेंस ऑफ सेल्फ है, अपनापन की फीलिंग है, वो डिसलोकेशन में बदल गई. कल्चर इज डिस्ट्रॉयड बाय सुपीरियर कल्चर ऑफ ब्रिटेन एंड वी फेल्ट एलियनेटेड. और हुआ क्या कि हम या कोई भी और कॉलोनी या कॉलोनाइज्ड लोग हैं, उन्होंने बहुत फील किया एलियनेटेड. उनको अजीब लगा, उनको अपनी जगह पे ही परायापन लगा. द डायलेक्ट ऑफ प्लेस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ फीचर. द डायलेक्ट ऑफ प्लेस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ फीचर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज. तो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी की बात करोगे आप या लिटरेचर की बात करोगे, वहां पे प्लेस, डिस्प्लेसमेंट, लोकेशन, डिसलोकेशन, सेल्फ एंड अदर, ये सारी बातें आएंगी ही आएंगी. The alienation of vision and the crisis in self-image which this displacement produces is often found in the account of post-colonial literature. तो इसको आप सिंपल भी लिख सकते हो. Post-colonial literature is replete with, जो भी मैंने अभी बोला है, sense of alienation, meaninglessness, rootlessness, discrimination, race, gender, dislocation, displacement, ये सारे फीचर्स आप ऐसे सिंपल करके लिख सकते हो. That is why I'm saying keep noting down side by side. And this alienation is inevitable until the colonizing language has been replaced by the vernacular or appropriate as English. ये small ही है. तो ये तब तक एलियनेशन वाली फीलिंग रहेगी जब तक आप अपने आप को डीकोलोनाइज नहीं करते. आप अपनी भाषा में नहीं लिखते, या आप इंग्लिश में लिखते हो, लेकिन आप इंग्लिश में अपना जो तरीका है, जो अपना ट्रेट है, एक सलीका है लिखने का, आपका ढंग है, वो आप इंडियन या
ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड वाला नहीं रखते, राइट? तो अगर आप वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब इन केस इंग्लिश की बजाय हम हिंदी या पंजाबी पे आ जाएं, इट वुड मीन कि हमने अपने आप को डीकॉलोनाइज कर लिया। और अगर हम कहीं लिख रहे हैं, हम इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, हमारी इंग्लिश ऐसी हो जैसे इंडियंस, एक्सप्रेशन इंडियन हो उसमें, दैट्स इट। वी हैव एग्जांपल ऑफ चिनुआ एचबी, who writes in English, but he still is known for decolonizing the mind. We have writers like Ngugi Wa Thiong. What they do, they write in English, but their texture, their treatment, their expression is always, their own personal. And the same way, Raja Rao and Chinua H.P. are two such authors who molded English to suit their purpose. And Raja Rao is famous for his foreword to Kanthapura, where he says Kanthapura is the name of his novel that he wrote in 1938. What he writes in that? He says, we cannot write like the English. We should not. English is not an alien language to us. It is the language of our intellectual makeup, नॉट ऑफ आर इमोशनल मेकअप। कि ना हम इंग्लिश की तरह लिख सकते हैं, ना ही हमें लिखना चाहिए। इंग्लिश हमारे इमोशनल मेकअप की लैंग्वेज है ही नहीं है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ आर इंटेलेक्चुअल मेकअप। This statement makes it clear that many writers like Raja Rao used Indianized version of English. अब Indianized version कैसे? जिसमें आप सिंदूर वर्ड यूज करो, जिसमें आप मैरिड वेमेन की बजाय आप सुहागन वर्ड यूज करो। तो अगर आपने कोई इंडियन एक्सप्रेशन रख लिया, वेरांडा वर्ड कई बार इटैलिक्स में लिखे होते हैं ना वर्ड्स, इंग्लिश की स्टोरी होती है और इटैलिक्स में वर्ड्स लिखे होते हैं, ऑल दोज आर इंडियनाइज्ड यूज ऑफ लैंग्वेज, using its expression to demonstrate the man, milieu and race of Indian society. English को ऐसे यूज करो कि Indian man, milieu, race सब डिपिक्ट हो बीच में। ये कॉन्सेप्ट होमी भाभा के दिए हुए हैं। Their English indeed bore the burden of their experiences. तो फिर क्या होता है, कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनकी राइटिंग में आपको उनके एक्सपीरियंस का बर्डन जो है वो नजर आएगा। The idea of post-colonial literary theory emerges from the inability of European theory to deal with the complexities and essence of colonial nations. तो क्या हुआ, क्यों ये पोस्ट कलोनियल लिटरेचर या पोस्ट कलोनियल थेरी पैदा हुई है? क्या रीजन है? क्योंकि यूरोपियन थेरीज हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ डील नहीं कर सकती। जो कॉलोनाइज्ड नेशंस का एसेंस है ना, जो अंग्रेजों ने अपने कल्चर के अंदर छुपा लिया, वो कभी निकल के आएगा ही नहीं अगर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी नहीं बनेगी। Theories of style and genre, assumptions about universal feature of language, value systems are all questioned by a practice of post-colonial writings. तो post-colonial writings ने क्या क्वेश्चन किया, किसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, किसको एक्सप्लोर किया? Theory of style को, genre को, assumptions, universal features of language, value system, इन सबको क्वेश्चन किया। Post-colonial theory also looks at the broader interactions between European nations and the societies they colonized or ruled over by dealing with issues such as identity, gender, race, and language, representation, and history. So, basically, what happened? जो post-colonial theory थी, उसने broader interactions की तरफ देखा कि यूरोपियन नेशंस का और उनकी कॉलोनीज का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे देखते हैं। और जब ये रिलेशन को स्टडी किया गया तो रेस, जेंडर, क्लास, लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें सामने आई जहां पे डिफरेंसेस थे। Because native languages and cultures were replaced by European tradition, part of post-colonialist project is reclamation. Very important point. क्योंकि काफी चीजें थी जो नेटिव्स की, जो नेटिव लैंग्वेज या कल्चर था जो रिप्लेस कर दिया गया, राइट? काफी ऐसी सारी चीजें थी जो रिप्लेस कर दी गई, किसके द्वारा? यूरोपियन ट्रेडिशन के द्वारा। इसलिए पोस्ट कलोनियल थेरी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर या पोस्ट कलोनियल प्रोजेक्ट का एक पार्ट रिक्लेमेशन भी है, अपना सब वापस लेना।
In fact, marginality thus became an unprecedented source of creative energy. तो ये जो marginality है ना, कि बिल्कुल अलग कर दिया, इस marginal होने में marginality ने क्या produce किया? Creative power. So it became source of creative energy, creative power. तो अगर आपको धक्का नहीं लगता, जैसे अगर हमें कोई पुश बैक नहीं करता, हम पुश फॉरवर्ड नहीं होते, राइट? तो वैसे ही जितना झटका इन कंट्रीज को लगा, उतने ही जोर से इन्होंने अपना एक्सप्रेशन देके आगे आए. On the whole, it can be said that the book The Empire Writes Back deals with the development of post-colonial writing, process by which language is captured, material practices of colonialism, existing post-colonial theory, and examining the implications of post-coloniality for theories of language and literature. And that is all. I hope the whole answer is clear, and it is definitely going to help you out in having very good marks in your finals. Take care. Bye bye. Wish you all a very, very happy new year. May God bless you all. बहुत खुश रहें, आबाद रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें. All the very best. Keep learning hard. Take care of yourself. Bye bye for now.